वीडियो में हम लोग को बनाना है एक सॉफ्ट बॉक्स। तो उसको बनाने के लिए मैंने एक एमडीएफ बोर्ड का पीस लिया है। तो ये एमडीएफ बोर्ड का पीस मैंने इसे जैसे कोई भी आप शेप का ले सकते हैं, वो अपनी नीड के हिसाब से कि आपको कितना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स चाहिए। और मैंने इसका कोई मेजरिंग नहीं है और इसको मैंने 45 डिग्री पे सबको कट कर लिया है। जैसे आप देख रहे हैं 45 डिग्री पे इसको सबको कट कर लिया मार्किंग करके। तो उसके बाद हम इसको एक बॉक्स टाइप का बनाएंगे एंगल में। तो चलिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real, I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. फिर ये जो दो पीस हैं ये वुड के, तो ये मैं इसके पीछे लगाऊंगा इसकी स्ट्रेंथ के लिए, कि फ्रेम उतना हार्ड नहीं है तब भी इससे थोड़ी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो इस फ्रेम को ऐसे ही लगा देंगे हम लोग, और इस फ्रेम को हम इस नट बोल्ट और वॉशर की वजह से हाइड कर, मतलब वो एकदम हैंग कर देंगे अच्छे से। तो चलिए हम इसको फिक्स करते हैं। तो मैंने इधर जितने भी नट बोल्ट थे उसको अच्छे से टाइट कर दिया फ्रेम लगा के, और इसमें मैंने इधर एक कनेक्टर लगाया है कि इधर से मैं वायर कनेक्ट कर लूँ अपना, और कोई भी वायर इधर से सप्लाई देने के लिए। और मैंने इधर स्ट्रिप लाइट और ऐड कर दी अच्छी लाइट के लिए। तो इधर स्ट्रिप लाइट ऐड करके बाकी पूरा मैंने इसको 12 वोल्ट वाला बना दिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर एक फ्रेम लगाएंगे। ये फ्रेम कुछ ऐसा रहेगा, इसमें मैंने जो बटर पेपर होता है मैंने उसका यूज़ किया था, इसका यूज़ किया और मैंने MDF का एक फ्रेम बना लिया था। तो इसको फिर हम इसके ऊपर सेट करके इसको स्क्रू की हेल्प से फिट कर देंगे। मैं स्क्रू की हेल्प से फिट करता हूँ, फिर मैं आपको पूरी टेस्टिंग दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। उससे पहले गाइस हम इसके पीछे हैंगिंग के लिए एक वो फिट कर लेते हैं। तो हैंगिंग के लिए मैंने इसका यूज़ किया, ये कुछ हिंजेस हैं, मैं इसको इधर इधर माउंट करके
यूज़ करूँगा। मैंने इसको इधर सेट कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको फिक्स करके फिर इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। फाइनली हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने इसको स्टैंड लगाने की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई थी, इस वजह से मैंने इसको लगा दिया। तो मैं बता देता हूँ उसको क्या किया। मैंने इसमें रॉड लगाई है और उसको मैंने अच्छे से स्क्रू से माउंट कर दिया है। और इधर मैंने जो ये बोल्ट वेल्ड करवा के इधर जंजीर से इसको अच्छे से टांग दिया है। और बाकी तो ये मैं इसको आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ कैसा वर्क कर रहा है। इसका स्विच मैंने ऑन कर दिया है, तो इसकी लाइट भी अच्छी है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक मिलते हैं किसी एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।